समस्त नमस्कार। तो आज आम हिस्ट्री मेडिवल इंडिया रो किसी एमसीक्यूज गुड़ी को डिस्कसन करबा जहाँकि आपण को परीक्षा रे सहाय्य करिवो। तो ये आम रहा मेडिवल इंडिया प्रथम क्वेश्चन, तोडरमल इज एसोसिएटेड विथ द रेवेन्यू सिस्टम नोन आज। जो रेवेन्यू सिस्टम थिला मेडिवल टाइम रे तोडरमल को समय रे जे कि अकबर समय रोतले, तो से जो रेवेन्यू सिस्टम थिला तार नाडा कोन थिला? यार ऑप्शन है ऑप्शन सी जब्ती और जब्त। देन क्वेश्चन नंबर 2, द ओरिजिनल नेम तानसेन द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर को टाइम रे जो तांकर म्यूजिशियन तांकर दरबार रे थिले तानसेन तांकर ना थिला, तांकर ओरिजिनल ना कोन थिला? तार आंसर है रामतनु पांडे। क्वेश्चन नंबर 3, of the so called 9 जेम्स of the अकबर कोर्ट। अकबर दरबार जो 9 जन जेम्स थे, हु वाज रेप्यूटेड पोएट, से जो पोएट तांका भितर थिले तांका नाडी कोन थिला? तो तार आंसर है ऑप्शन सी अब्दुल रहीम खाने खाना। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन ऑफ द रेन ऑफ अकबर हु रोट अकबरनामा एंड आईने अकबरी। अकबरनामा और आईने अकबरी किए लिखिथिले? ऑप्शन है अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 5, अकबर ग्रांटेड द प्रेजेंट साइट ऑफ अमृतसर टू द सिख गुरु। अमरदास को टाइम रे से दान करथिले। क्वेश्चन नंबर 6, मनसबदार सिस्टम वाज फाउंडेड बाय अकबर, द मनसबदार सोर। तो मनसबदार सोर कौन थे? तो चारिटा जाक मनसबदार जी मिलिटरी कमांडर, सिविल मनसबदार प्रोविंशियल गवर्नर, सिविल मनसबदार हाई सिविल एंड मिलिटरी ऑफिसर, से भी समस्त मनसबदार थे। क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट इंपोर्टेंट पोएट एट द कोर्ट ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी हु रोट शाहनामा। शाहनामा किए लिखिथिले? तार आंसर है फिरदौसी। Question number 8, during the course of his numerous invasions Muhammad of Ghori before his conquest, the second battle of Tarain was defeated by। सेकंड बैटल जो होता मोहम्मद घोरी आउ आमर पृथ्वीराज चौहान तांको भितर हारी थिले किए से? तो दुईटा चालुक्य किंग भीमा सेकंड ऑफ गुजरात एंड पृथ्वीराज चौहान ऑफ अजमेर, दी जन जाक हारी थिले। क्वेश्चन नंबर 9, मोहम्मद घोरी लेड द फाउंडेशन ऑफ द तुर्किश एम्पायर इन इंडिया बाय डिफीटिंग। मोहम्मद घोरी तुर्किश एम्पायर जितने इंडिया स्थापना कले से क्या हरी करते? तो पृथ्वीराज चौहान को होते बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल रे जयचंद्र को होते इन द बैटल ऑफ चंदावर। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज सेड दैट मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी one of the commanders of Muhammad Ghori conquered Nadia, one of the capitals of Bengal, with only 18 horsemen. King of Bengal who then fled barefoot from his place was? their answer is Lakshman Sen। बख्तियार खिलजी आसते जो आम नालंदा यूनिवर्सिटी की जाड़की ध्वंस विध्वस्त कर पड़ता, तो ये थे कहार मोहम्मद घोरी सी थे आमर जेनेराल थे। The Buddhist universities of Nalanda and Vikramshila in Bihar were destroyed during the invasions of Muhammad। बख्तियार खिलजी तथा को ध्वंस कर देला। ठीक अच्छे, बख्तियार खिलजी। The real founder of Sultanate of Delhi and its first dynasty was। तो दिल्ली सल्तनत रो रियल फाउंडर कहा को कहा जाए? तार आंसर है इल्तुतमिश। Question number 13, from the point of view of the Turkish rule, the most important contribution of Iltutmish। इल्तुतमिश करो मोस्ट ग्रेटेस्ट अचीवमेंट कौन थिला ए टाइम रे, कौन करूथिला? तो आंसर है से इक्ता सिस्टम स्टार्ट करथिले। क्वेश्चन नंबर 14, रजिया एटी हजिया है रजिया द डॉटर ऑफ द इल्तुतमिश, द ओनली वुमन रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया ascended the throne with the support of
all of the above. Question number 15. The first medieval ruler to propound the divine theory of kingship was, and answer is Balban. Question number 16. The first Sultan of Delhi to cross the Narmada and move to the south was, answer is Alauddin Khilji. Question number 17. The only known ruler in the history of India to have fixed the prices of different commodities, rigidly enforced quality control, and ensured easy availability of essential commodities. And answer is Alauddin Khilji. Question number 18. Alauddin Khilji rigidly enforced market control or economic regulations for चारोटी ऑप्शन रही आंसर हो ए बी दुईटा जाक. Question number 19. Muhammad bin Tughlaq transferred his capital from Delhi to Devkari, which is later by Daulatabad, because एठी 8टा जाक ऑप्शन मिलता है. Delhi was insecure on account of Mongol invasions. Devkari was more centrally located. Question number 20. The Sultan who completed the conquest of the south and broke the political barriers. The answer is Muhammad bin Tughlaq. Question number 21. The famous Moorish from Morocco traveler Ibn Battuta was visited India recorded his experience in his book entitled Safarnama or Rihala. Was appointed Qazi of Delhi. The answer is Muhammad bin Tughlaq. Question number 22. The most important aspect of Sultan Firoz Shah Tughlaq constructive policy was. तो से जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी थिला सेतरे कोन थिला तो डिगिंग ऑफ कैनाल्स एंड वेल्स ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 23. मैच द रेस्पेक्टिव सिटीज फाउंडेड बाय द सुल्तान ऑफ दिल्ली. तो अलाउद्दीन खिलजी फाउंडेड करथिले सिरी. गियासुद्दीन तुगलकाबाद. मोहम्मद बिन तुगलक जौनपुर. गियासुद्दीन तुगलक ऑप्शन टा देखीदा पड़ो. ऑप्शन टा थोड़ा ऑप्शन एटा थिला तो छाड़ दिया एटा क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 24. द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु ट्रांसपोर्ट द मोनोलिथिक मॉडर्न पिलर टू दिल्ली टू. आंसर इज फिरोज शाह तुगलक. क्वेश्चन नंबर 25. तैमूर invaded India and ordered general massacre of people of Delhi during the reign of. आंसर इज Nasiruddin Muhammad. Question number 26. A ruling dynasty established in India at the instance of Taimur was. The answer is Sayyid. Question number 27. Akbar of Kashmir, who reconstructed and rehabilitated all the temples and asked Jona Raja to continue further Kalhana's Rajatarangini, was. The answer is Zainul Abidin. Question number 28. The most decisive battle between the forces of Dara and Aurangzeb, the war of. The answer is Samugad. Question number 29. Assuming the title of Alamgir, Aurangzeb crowned himself as emperor on July 21, 1658. The answer is Delhi ro crown करथिले से. Question number 30. The famous Mughal general who conquered Assam, Chittagong, etc. in the northeast was से किए थे. The answer is Mir Jumla. Question number 31. Aurangzeb in his first attempt to annex Marwar to the Mughal Empire was involved in 30-year war. During the long years, the most valiant struggle from the Abbasid of Marwar was fought by. The answer is Durgadas. Question number 32. The Sikh Guru executed by Aurangzeb after the cruel torture was. The answer is Tegh Bahadur. Guru Tegh Bahadur.
Question number 33. During the last 25 years of his reign, Aurangzeb was mainly involved in the long drawn. Answer is Maratha satire se busy thila. Question number 34. Shivaji founded the Maratha kingdom by annexing the territories of. Answer is both Bijapur and Mughals. Question number 35. The liberal religion preached by the saints of Maharashtra and rigidly followed by. The answer is Maharashtra Dharma. Question number 36. The Mughal general who decisively defeated Shivaji and forced him to conclude the. The answer is Mirza Raja Jai Singh. Question number 37. The Maratha dominion of Shivaji was known as. The answer is Swaraj. The administrative council of Shivaji was known as Ashtapradhan. Question number 33. Tarabai, who conducted the affairs of the Maratha government from 17 to 1707 AD, was the widow of Maratha king. The answer is Rajaram. Question number 40. The Mughal government can be described as an a. The answer is centralized despotism. Question number 41. The Mughal troops were largely drawn from. Mughal troops जो रही हैं इसमें कौन आसले समझते largely तो समझते आसले मनसबदार्स. Question number 42. The Jagirdars during the Mughal period were. The answer is option C, all assigners of Jagirs. Question number 43. Which of the following buildings at Fatehpur Sikri is known as Ibadat Khana, where Akbar used to hold religious discussions? The answer is Diwane Khas. 44. Noor Jahan is associated with the construction of. Noor Jahan both A and B is the Humayun ro. ठीक है both A and B. Her husband some Humayun ro Tom, then D Rahila. Her father's Itmat Udollad's Tom in Agra. Question number 45. Two marble masterpieces of the reign of Shahjahan were. Shahjahan समय के masterpiece गठन होइतिला तो ए लम पर्ल मस्क जोटा हम ताजमहल आटा आगे पर्ल मस्क मोती मस्जिद जोटा हम रही कोठी अपन एटा कमेंट रे करिवे. 46. On the wall of which building built by Shahjahan is the following Persian couplet? The answer is option D, Diwane Khas, Delhi. Question number 47. The later Mughal king popularly known as Shah Bekhabar, the headless king. Your answer is Bahadur Shah. Question number 48. Two Sayyid brothers, Sayyid Abdullah Khan and Sayyid Hasan Ali Khan, rose to become the kingmakers during the later Mughal period, made their downfall during the. Answer is Muhammad Shah Rangila time. 49. The famous Sikh leader Banda Bahadur was captured and executed during the reign of Mughal emperor. Answer is Shah. Question number 50 जोटा कि हमारे लास्ट क्वेश्चन छी आज सीरीज रो एवं आगु मध्ये सीरीज हम कंटिन्यू रखिबा. तो which Mughal emperor was the great musician, a great patron of Hindustani music and was popularly known as Rangila? Your answer is Muhammad Shah Rangila. तो ये हमारे 50 क्वेश्चन इस सीरीज को मध्य आगे आम कंटिन्यू करिबा. तो आम सह यही भाव में आप जोड़ी ही रुहतु. समस्त को धन्यवाद.